yesterday's class, some students found it difficult. So one thing is, like somewhere people were asking, tell me resources so we can read and come. So what I suggest, there is no need. Understand here only, because you will not find these things at one place. Okay? So even if I recommend, you may get more confused. For initially 2-3 days you may find, but then things will become smooth, so don't worry. And I will not mind if you interrupt then and there, and you can seek clarification. Okay? So don't hesitate, there is no problem, because it will save your own time. You will keep on searching, but you will not get the concepts in the books. Okay? So, and yesterday what I discussed was very basic thing. Okay? So for UPSC, like we started with what? Nothing. I told about constitution. Just a minute. Written constitution, flexible constitution, type of majority. Okay? And then what we discussed, democracy, little bit, constitution, constitutionalism, some rule of law as a concept, and in the rule of law I was discussing freedom, and suddenly this freedom and liberty. So I was discussing this natural process, etc. So first of all, don't get scared. Okay? These are big terms but very easy to understand. Okay? तो ऐसा कुछ है नहीं. Polity, you don't need to learn, you have to apply your logic. Logic से समझते हैं polity. Okay? So what I will do, in the end I will give you the list of the concepts. You go home and try to see, are you clear or not with the concepts. Okay? And you can share your difficulties with me. Yes, you wanted to ask some question. Does law limits the freedom? And if law limits the freedom, so how can we accept law made for the welfare of the people? Law limit freedom? Yes or no? Yes. When law is there, you have to act according to law. See, you can cross the red light, but this freedom is restricted by law. So law limits freedom. Okay? Now the question is, when law is limiting my freedom, why do we need law? The answer is, extreme of anything is bad. Okay? And you live in the society where others also have freedom. So your freedom needs to be restrained, so that freedom of others can also enjoy. Since other person is respecting your right, it is your duty to respect his right. So there is a saying, my freedom ends where someone's freedom begins. Okay? So you cannot have extreme, because you don't live alone on this earth. You live in the society. Okay? So it is said that in this earth, it is men and not man who lives. बहुत सारे लोग हैं, सबकी freedom, how will you manage? You got the answer? Okay. Yeah. What kind of
Absolute majority. Absolute majority in the sense 50% of the total strength of the house. But this is like practical thing. Suppose some seats are vacant, then effective majority. But suppose no seat is vacant, it becomes absolute majority. But in the constitution, absolute majority is not mentioned anywhere. Okay? Now any other simple majority is what? 50% of the members present and voting. Suppose all members come. Suppose 545 members come, then 50% plus 1 of the present and voting. This becomes absolute also or not? You have to have absolute. How will you measure? What? If 500 members come to the house. But finally what if they come? It means you will intern them, you will not let them come. It happens. Sometimes the MPs, or not MPs but mostly MLAs, they are unable to reach. That is a different case, but anything else in yesterday's class, like from where you all started finding it difficult? Natural law, you found it difficult? Due process of law, natural law, procedure established by law. Any difficulty you ask, don't hesitate, you will not find it in books. Majority, 50% plus 1. Every country has a constitution. There cannot be a country without constitution. तुम कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को एक कैसे समझ रहे हो? कंट्री में हैव रिटन, इट में हैव अनरिटन. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? कि स्ट्रक्चर. योर बॉडी हैज अ स्ट्रक्चर. ऐसे ही स्टेट का स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इट इज क्लियर. Liberal democracy and parliamentary form of government, is it same? No. What is the difference? Chalo, liberal, when I will discuss liberal, then you come. Yesterday I ended the discussion at due process of law and procedure established by law. This is fine, no difficulty, yeah. Which one is better? Better for what? Depends on the context. When in India also, it depends on the due procedure, so anyway you need. If government acts in a responsible manner, if legislature pass the law which is right, then you don't need due process. But when legislature goes for overreach, that needs to be balanced by judicial activism or overreach. So at the time when Indira Gandhi government was bent on doing excesses, it was right on the part of judiciary to go for this creative interpretation, to never give answer in yes or no. It is all in the context. There are dangers in due process of law. No doubt there is a danger in a due process of law, because it is based on reason of judge. Reason may vary from judge to judge, so this creates uncertainty.
Okay. So basically in original constitution this principle was there? No. So when you study the Constituent Assembly debates, Constituent Assembly rejected the due process of law principle. Why reject it? Because it creates uncertainty in the law. Some judge may find it reasonable, some may not find it reasonable. Okay. So what happened was they have stick to procedure only. But then as the situations changed, need arose and interpretations changed. Yesterday you studied that constitution is what judges say. When recent controversy on the elevation of KM to the Supreme Court, so when there the executive is the ultimate power, you can see, because they are not letting him. What is the meaning, what are the provisions in the constitution in that sense? But the provision is the ultimate power to elevate a judge to this level. So it is not necessary na government follow the constitution. Like I come from Raghan only, so there people are speculating that it is politically motivated. That what happened back in 2016, that's why. It may be politically motivated. What do you know what is happening behind the curtain? There can be a nexus between the government and the judiciary also. So that is immaterial for us. What is important is wherever there is a written constitution, judiciary automatically becomes supreme, because judiciary is an interpreter of the constitution. Is this clear? Yes? 10 choose to vote. 10 nahi, there has to be a quorum. Oh sorry, 10 present and voting. 545, then yes. Yeah, 6 will be the majority. Okay. So now I was explaining the different ideologies, right, left and all. Okay. And I was telling about democracy. Okay. And the democracy which we know is liberal democracy. And I told you the features of a liberal state. Liberal state means limited state where power lies with the people. That is liberal state, that is liberalism. Okay. And democracy where government is by the people. Democracy where government is elected by the people is an example of liberal democracy. So which type of democracy India is, liberal or socialist? Liberal. Now it is clear, liberal. Now you have asked what democracy and is democracy and parliamentary form of government is same. Write this question. Is democracy and parliamentary form of government same? What is your view? Is it same? No. So you can write this, that in a any democratic country can adopt different democratic forms. Okay? So there can be different democratic forms. So to begin with,
forms of government. To begin with, democracy, it can be direct democracy, it can be indirect. Direct and indirect. So, at the national level, which type of democracy we have? Indirect. What is the other name of indirect democracy? Representative. So, where people choose their representatives. At panchayats, which type of democracy we have? Direct. What is direct democracy? People directly participate in governance. So, in panchayats and municipalities, you directly participate, you go to the panchayat. Huh? Yes. So, direct democracy in India is Gram Sabha. Okay? Is there direct democracy in municipalities? No. Okay? म्यूनिसिपैलिटी में कोई मोहल्ला सभा है? हाँ? नहीं है. ठीक है? Ward committee is not having the powers like Gram Sabha. ठीक है? So, panchayat, the three institutions are elected by the people, representative. Now, forget this. Representative democracy can have various forms. The three prominent forms are parliamentary, presidential, and a hybrid form, semi-presidential. A hybrid form, semi-presidential. Now you got the answer. Okay? So, parliamentary form is a type of democracy. Now, democracy and republic, is it same? No. What is the difference? Democracy and republic. So, again answer will be different for political science and GS. Is that clear? So, democracy versus republic. So, if we see UK, UK is a democracy, but is it republic? It is monarchy. India, democracy. Is this clear? So, republic and democracy, now we differentiate on the basis of head of state. Is head of state hereditary or elected by the people? Okay? Hereditary or elected by the people. Is this clear? Fine. Which form of government is there in Nepal? Republican or monarchy or constitutional monarchy? Constitutional monarchy. In which year you are living? किस साल में तुम लोग जी रहे हो?
10-15 साल पहले इट हैज़ बिकम रिपब्लिक, ठीक है, तो रिपब्लिक है, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. What about Bhutan? It is a constitutional monarchy. Okay. So now let us see the features of parliamentary form of government. Right? France. I will tell. So now first start with parliamentary form of government. So these type of conceptual questions will come. Parliamentary form of government, and why India had adopted parliamentary form of government, and suppose in mains they can ask, should we shift to presidential form of government? Okay. So what is parliamentary? What are the features of parliamentary form of government? What is the main feature of parliamentary form of government? Pardon? Decentralization is a feature of parliamentary form of government. Option A. Is it right option? No. Decentralization और parliamentary form का कोई संबंध नहीं, ठीक है. यस, अभी सुनो पहले. तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल you distinguish on the basis of the relations between legislature and executive. ठीक है. Separation of powers is a principle of presidential form of government, and fusion of powers is a principle of parliamentary system. So point number 1, right, the difference in parliamentary and presidential is based on the relationship between executive and legislature. Okay. So right, next point. In presidential system, there is a separation of powers. Between legislature, sorry, which one I said? Yeah, between legislature and executive. Means no member of the legislature can be the member of executive. Okay. So in USA, the ministers or secretaries, are they member of any of the house of Congress? No, it is based on a strict separation. Is this clear? Next, right, in parliamentary system, it is based on fusion of power. Means executive is the part of
legislature. लास्ट टू लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फीचर विच इज़ द मेन फीचर. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है. सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम who forms the executive? The party which has confidence or the majority of both the houses or just lower house? Lower house. Okay. So in parliamentary system the term of executive is fixed? No. Okay. So it can go any time it loses the majority. Is this clear? So what is the virtue of presidential system? It is stable. It is stability, fixed term. Okay. Whereas in a parliamentary system neither the term of parliament is fixed nor the term of executive is fixed. Okay. So executive can dissolve parliament, parliament can throw executive out of power. Okay. So stability, right? Second point, stability. Stability is the virtue of parliamentary system, sorry, presidential system. And what is the virtue of parliamentary system? Why we adopted parliamentary system? Comma. Right. Right. Parliamentary system is more representative oblique more democratic. ठीक है. Next, right, in presidential system there is a single executive. Full stop. No difference in head of the state and head of the government. ठीक है. Like US president, head of the state, head of government. When we use the term head of government, government means executive. ठीक है. No difference, right? Yes. Executive, the government, prime minister can recommend president to dissolve the house. Okay. But it is a prerogative of the president. There are few things where president has a discretionary powers. He may listen immediately, he may not. He can use his prerogative also. Okay. Second, next point. Right. In parliamentary system, there are two heads, or there is a plural executive, or prime minister is the real head. Means this is head only for the
namesake. Okay, this is fine. So India has this parliamentary system, and it is right if I say president is a rubber stamp. Okay, so president is the head only for the namesake. Is this clear? So president's power is just, it is a position of dignity, no rights. Is this clear? So here you can write this, right? In parliamentary system, head of the state has only 3 rights. First, right to be informed. Prime Minister will keep him informed. Next, right to warn. Warning, don't do this. Warn, that's all. And right to encourage. You need these rights. How boring rights. Huh? Right to encourage, right to warn, and right to inform. Is this clear? Now, one more thing you write. Right, in parliamentary system, the nature of executive is called as plural executive, plural executive, comma, also because of the cabinet form of government. You know the features. This question came last to last year. What is the feature of the cabinet form of government? So write cabinet form of government. अब options सभी सही होंगे, लेकिन you have to think about what is the theory, what is the principle. Have you understood this? So cabinet form of government is based on the principle of write inverted commas, collective responsibility. Okay, so it means all ministers, they sink and swim together. Okay, no confidence motion even against the single minister, all will have to pay. Is this clear? So this is called as principle of collective responsibility. Okay, no collective responsibility, no plural executive in presidential form of government. Okay, so you must be knowing the debate on the presidential form of government, that should India go for presidential form of government. Write this question. President is for nominal or regular. Why do we need that post? Why do we need that post? First thing is, in case the Prime Minister is not, or
the Council of Ministers loses the confidence of the House to maintain the continuity. One thing. The second thing is Prime Minister is the head of the party. So you cannot consider him impartial. ठीक है? So whichever law will be made, you will feel that it is not unbiased. Okay? So symbolically, all laws are signed by President, because President in India, Queen in Britain can be considered as neutral. Okay? Why President in India can be considered as neutral and above party politics? Because of system of election. System of election is proportional representation. Okay? So President needs the support of other parties also. Only one party will not be able to make the president. And then President has a security of tenure. There are two logics behind it. You have understood this? Now, write this question. Parliamentary or presidential type. Parliamentary or presidential type comma, which form of government is better for India and why? This is just in a sarcastic way. They say that you are a president, you have 3 rights. It is not mentioned. See, these are the theories I am giving on the basis of British Constitution. There is one thinker, Bagehot. ठीक है? तो Bagehot has written that in Britain, Queen has 3 rights. Right to be informed means Prime Minister will keep them informed. Queen can warn that you are doing wrong as an elder. Okay? So right to warn, and if government has done something, encourage. So basically, Queen is friend, philosopher and guide of the Prime Minister. Okay? In India, you have this in Article 78. Okay? That I will do when we will do President as an institution. So under 78, Prime Minister's responsibility to keep President informed and to give all information which he needs and consult the allocation of business to different ministries with the President. This was the reason. Actually, Rajiv Gandhi and Jail Singh, what was the reason of conflict? So according to Jail Singh, whatever information he was asking, Rajiv Gandhi was not providing. ठीक है? And what information he was asking? Information on anti-Sikh riots. The commission, Nanavati Commission's reports. ठीक है? तो यहाँ पर भी ये है. तो it's a position of dignity, if not the position of power. Is this clear? And he is like a elder or a big brother. Yeah. Without Prime Minister, survive क्या मार डालोगे?
हाँ, प्रेसिडेंट को क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रहता है, तो तुम कह रहे हो प्रेसिडेंट विल ऑल्सो डाई, ऐसा नहीं, हम बने तुम बने ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर चाहिए ना मैम। हाँ तो केयर वाइस प्रेसिडेंट रूल थोड़ी कर सकता है, कौन, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, तो प्राइम मिनिस्टर के बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती, मतलब नहीं, इंडिया नहीं चल सकती। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द फॉर्मल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देयर कैन बी अ प्रेसिडेंट्स रूल एट द स्टेट, बट देयर कैन नेवर बी अ प्रेसिडेंट रूल एट यूनियन। यूनियन में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स देयर शैल ऑलवेज बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो प्रेसिडेंट्स रूल, नेवर। Is emergency under Article 352 President's rule? No President's rule. Under 356 President's rule, but 356 is only at the level of state. So it is better to be a caretaker Prime Minister than to be a President. Okay, you have more power. Now the question is why we adopted parliamentary system, which is better for India, things have changed, and do you support the presidential system? How will you write this answer? You support presidential system? You don't support. What is the problem there? America does not have good government. America is not diverse. Huh? Single person rules. At present, is it not a single person rule? No. It is not Modi government. Anybody says BJP government or you say Modi Sarkar? Indira Gandhi, Indira Sarkar, or it is practically always a one-man rule. Anyway, first of all tell me why we have adopted parliamentary system. Familiarity. Okay, so first of all write reasons for adoption of parliamentary system. So first you can say familiarity. Familiarity was obviously when the parliamentary system was introduced in India. Huh? Which act? Government of India Act 1919. Okay, एक तो familiarity थी. Second, is it more democratic? Yes. Second you write, it is more democratic. On what basis you say more democratic? Because there is a collective response, right? It is it is more democratic because the power is not concentrated in the hands of one person. There is a cabinet, there is a cabinet or council of ministers. ठीक है. Next, it is more accountable. Yes, it is more accountable on day-to-day basis.
day-to-day basis. Okay, so you require just a simple majority to throw the government out of power, whereas in USA impeachment is a cumbersome process. Okay. Next, more representative. Comma, thus thus more suitable for India's diversity. India's diversity. So you can make people from different background, you can give them a place in the government, and in India a person can be a minister even without getting elected for at least 6 months. Is this clear? So more suitable for India's diversity. Yeah. In presidential form there is one man, it's a one-man show. You can do, but the ministers are picked and chosen by the president. Okay, and ministers, there are the secretaries. Okay, whereas in India prime minister is first among equals. Other ministers are also important, but I am all talking about theory. I am not talking about the reality. Huh? In theory, president of USA is strong. In practice, prime minister is strong. Is prime minister more powerful than president? So basically, prime minister under the parliamentary form of government is the strongest elected head. Why? Because president does not control legislature, whereas prime minister is the leader of house as well as the leader of government. So he is holding both executive as well as legislature. And in reality, parliamentary accountability is a myth. Yes, because there is no parliamentary accountability, and the reality is executive dictatorship. Okay, so if party in power has clear or absolute majority in the parliament, in both the houses, is there any legislative accountability? No. Is this clear? So if you talk in terms of theory, parliamentary system is more democratic. But if you talk in terms of practice, it is not. You understanding this? So for general studies, there is no need to go into the analysis. You just stick to this. These are the virtues of parliamentary system. Pardon? What would be in the case of France? France. France we will discuss separately. Okay. So now this is you have understood? Okay. Now the question is, why sometimes some people talk about that we should switch to presidential form of government. Okay. अब इसका लिखो, why there have been demands? Because I am not saying shift, don't shift, no problem. I am just saying why those who propose, why they propose, right? Why there have been, what you have written? Demands or proposals for
introducing presidential system in India. Okay. Why? Any idea? Stability. Okay. No. The main thing is there has been a age of coalition, and coalition government has resulted into political instability. It has resulted into increased defections, corruptions, and so some people proposed we should have a parliamentary form of government to avoid the instability. Because of coalition government, policy paralysis, instability, that was the main reason, because the main virtue was stability only. Is this clear? Right? Right. India had faced an era of coalition politics. Right. Coalition politics in the absence of healthy coalition culture. Healthy coalition culture. Healthy coalition culture कुछ प्रॉब्लम, मतलब हमने कोलिशन किसी के साथ किया, किसी ने हमें पैसा दिया, हम डिफेक्शन में चले गए, तो ये सब अनहेल्दी है. ठीक है. तो इंडिया में कोलिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट इज प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कोलिशन कल्चर. तो बिकॉज ऑफ unhealthy coalition culture, comma, there were many problems. First, instability. Second, policy paralysis. Next, defections, corruption, or horse trading. Horse trading. You know horse trading? Buying and selling of MPs and MLAs. Okay? Horse trading. HOR, घोड़ा. घोड़े पे दांव लगाते हो ना, ठीक है, वही हॉर्स. यू नो हॉर्स ट्रेडिंग नाउ? ठीक है. यस. कोएलिशन. ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं. कोएलिशन का मतलब होता है, अब एक बात बताओ, you know coalition? Coalition means to come together. ठीक है. When more than one parties, जैसे अभी भी नेम सेक के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या है? कोएलिशन. ठीक है. तो जब एक पार्टी नहीं कई पार्टीज होते हैं तो उसे कोएलिशन कहते हैं. Why to form coalitions? For majority. So coalition will be a feature only of parliamentary system, or it can be even in presidential system. Only in parliamentary, because party needs majority in the house. तो अगर hung assembly है, we do not have majority on its own, then what happens? कोएलिशन. अभी समझ में आया कोएलिशन? या
Which system is more transparent? Between whom? Which system is more transparent? मतलब more accountable? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो एक ही चीज़ है ना, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक्चुअली जीएस में बहुत बेसिक लेवल पे ही बात करो, मतलब अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी मत सोचो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में होता है ऐसे, थियरी में क्या है, मोर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल to the legislature on day-to-day basis. So more transparency is in parliamentary system. In presidential system, it is compulsory that we have only two-party system. No. Then why not coalition Why not coalition? in presidential part of? Suppose, see, what you said. See, first of all, in a presidential system, you don't need parties also. ठीक है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्टी सिस्टम पर बेस्ड कौन सा होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल में हमें कोएलिशन क्यों नहीं चाहिए? एक ही इंसान को इलेक्ट करना है, उस इंसान को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है कांग्रेस में? नो। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट हैज टू प्रूव मेजॉरिटी, तो इसलिए मेजॉरिटी नहीं चाहिए वहां तो है। प्रेसिडेंट चेंजेस व्हेन हिज टर्म इज ओवर, इफ ही इज नॉट री इलेक्टेड और इफ ही इज इम्पीच्ड और ही डाइज। अरे अगर री इलेक्ट नहीं है तो चेंज हो जाएगा, उसने इलेक्शन फिर से जीत लिया तो फिर आ जाएगा। पार्लियामेंट में सपोज मोदी गेट्स इलेक्टेड तो यूएस में क्या होगा? लेकिन मोदी जी विल हैव टू हैव अदर्स आल्सो ना गेट इलेक्टेड, ही हैज टू हैव मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। मैम तो ज्यादा मुश्किल क्या है? मेजॉरिटी। ज़्यादा बेहतर क्या है? लीडर के लिए क्या बेहतर है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना लीडर के लिए। लेटरल एंट्री फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अब हर चीज़ एक साथ में डिस्कस करो, वो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट है, तो ठीक है ना लेटरल एंट्री। तो फिर जो यूएस में सेक्रेटरीज चूज किए जाते हैं तो इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैम। वो इंडिया में यूएस में सेक्रेटरीज बाय हाँ, तो प्रेसिडेंट। थोड़ा थोड़ा यूएस सिस्टम की ओर जा रहे हैं ना। जैसे इंडिया में दो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट रही हैं, तो बीजेपी वाले लोग हमेशा प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फेवर करते हैं, कांग्रेस वाले पार्लियामेंट्री को करते हैं। शशि थरूर को बचना था इसलिए वो प्रेसिडेंशियल को करने लग गए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसके लिए अच्छा है? बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो अब हिंदूज इन मेजॉरिटी, केवल हिंदू वोट से यू कैन बी अ प्रेसिडेंट। इंडिया में इट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर दैट ए मुस्लिम विल बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो हिंदू ही बनेगा ना। तो हिंदू पार्टी, हिंदू मुस्लिम दो कैंडिडेट अगर खड़े करोगे तो हु विल बी प्रेसिडेंट? हिंदू, ठीक है। तो बिकॉज मेजॉरिटी इज हिंदू एंड बीजेपी इज अ पार्टी बेस्ड ऑन हिंदुत्व, it is always better for them if it is presidential system. That is why they have projected as if it is a Modi government. तो धीरे धीरे माइंड को कंडीशन करते करते एक दिन प्रेसिडेंशियल आ भी सकता है, लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। जो इलेक्शन का फॉर्म इज चेंजिंग इन इंडिया, बिकमिंग लाइक अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो हर सिस्टम के अपने फायदे नुकसान हैं।
अब आगे बढ़ो, कहाँ पहुंचे हम लोग? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है आई बिलोंग टू दिस पार्टी और उस पार्टी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। अब अपोजिशन पार्टी ने पैसे दे दिए तुमको कि इनसे निकल जाओ, हमारे साथ आओ, एक तो पैसा भी मिलेगा। मान लो इस सरकार में तुम मिनिस्टर नहीं हो, हम तुम्हें मिनिस्टर भी बनाएंगे, तो इंसान क्या होगा? डिफेक्शन कर लेगा उसी। हाँ, अब जब डिफेक्शन हो जाएगा तो ये सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ। इंडिया की क्या ईडियम है? आया राम गया राम। अपने पॉलिटिक्स का एक फिनोमिना है, लोग आते जाते रहते, इस पार्टी उस पार्टी, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। ठीक है, अब कहाँ पहुंचे? क्वेश्चन क्या था? वाई देयर हैज बीन डिमांड टू चेंज। तो मेन थिंग इज these problems. Now the question to you, should we change to presidential system? No. लिखो। और आंसर में पहले यस नो जजमेंट पहले नहीं देना होता है, पहले एनालाइज करना होता है। ठीक है, तुमने नो कर दिया, तुम क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हो? नो तो नो, जज को भी बताना पड़ता है भाई। ठीक है, तो शुड there be a presidential system? Tell me why not? You, huh? Why you do not want presidential system? India is a land of diversity. Less accountability. और तो same reasons which were relevant at that time are relevant today also. But what about the instability? How to tackle that? Leader, speaker should be given more power. Speaker to already so corrupt. Speaker's powers have to be taken, not given. Speaker should be should not have any real power to disqualify. उल्टा बहुत सारे कंट्रीज में डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन इज थ्रू कोर्ट्स, और इंडिया में भी अगेंस्ट स्पीकर्स जजमेंट पीपल गो टू द कोर्ट्स। स्पीकर को पावरफुल नहीं बनाना है, स्पीकर को जस्ट सिंबॉलिक रखना है। और कुछ? ठीक है, अब पहला पॉइंट नंबर 1, द रीजंस which were in the mind of the Constituent Assembly comma at the time of formation of the government are still relevant. ठीक है, any other logic you can give? See, you can practice with n number of n forms of government. Will anything change if people will not change? No. So institutions are shaped by the persons, and if we will not be able to change the persons, it will not make any difference whether it is parliamentary system or presidential system. So even Ambedkar said what? We are producing this constitution
but it will work. It can be the product of great genius, but it will work or it will not work. Will depend upon those who will come to occupy these positions. So believe that whichever form of government, it will not work until and unless people are not willing to make it work. So change will not, institutional change is never enough. It is fine, but what you required is ethics. The solution of politics lies in ethics. लोगों को बदलना पड़ेगा. Is this clear? So second reason is institutions will not make difference until and unless political culture changes. ठीक है, right? As suggested by Ambedkar, comma, the constitution will work or not. Comma, will depend upon the persons holding the institutions, holding these. You can change the institution, but you need to change the people. You need to change the culture. Which culture? Political culture. Now, what is the strongest argument not shifting to the presidential system? What? War will happen. Okay, that is also a good time, good concept, right? Right, presidential system, अब ये तो ऐसे भी आ सकता है, right? Presidential system has its own challenges. Right? One of the major weakness is the problem of gridlock. Gridlock. The grid of the government gets locked. ठीक है, तो जैसे पावर ग्रिड होता है, ऐसी ग्रिड ऑफ द गवर्नमेंट. इट मे हैपन that a conflict between executive and legislature arises, different party here, different party here, and the work of the government comes to halt. This has happened on many occasions in USA. Okay, so where even the budget cannot be passed. So this gridlock situation, yes. Which is better? In that sense, like coming to transparency. See, which is more transparent was his question, but I think in parliamentary system, executive is accountable to the government, accountable to the parliament on day-to-day basis. Okay, so that is why it is more transparent. Presidential system is transparent. They can lock the bills.
They can lock the bills even if bill is right, out of party interest. Locking is transparency. Like they can lock when corruption is also more. They can lock when bill is wrong. Corruption through bill कैसे होता है? No. Don't think that much. It is general studies. Okay? Keep it very simple, basic, theoretical concepts. ठीक है? अब इतना उसमें मत चले जाओ. Conspiracy, ये वो type, इतना बहुत है. This was a good point. वहाँ के अपने problems हैं, gridlock. But again, what is the strongest argument? It is a part of? I am not saying why it cannot be changed. I am discussing why it should not be changed. बेसिक स्ट्रक्चर तो बदलवा भी लेंगे जुडिशरी से बोल बाल के, ठीक है, हो सकता है वो भी होने लग जाए, लेकिन लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन को पढ़ना है. वाई इट कांट बी चेंज्ड. वी आर डिस्कसिंग वाई इट शुड नॉट बी चेंज्ड. Presidential, if presidential system is introduced, according to him, it will disturb the federal system. You think so? No. It will rather make federal system better. बिल्कुल उल्टा सोचते हो. Federal system is a product of which country? USA. पहला ओरिजिनल फेडरल सिस्टम है. उन्होंने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया? प्रेसिडेंशियल. फेडरल सिस्टम के साथ कौन सा सिस्टम जाता है? प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्ट्रॉयज फेडरलिज्म. ठीक है, अब कुछ पता वता नहीं तो रीजन मत दो, सुनो, सुनने का काम ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो सेंटर में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, स्टेट में गवर्नर इलेक्टेड होता है. इनका कोई संबंध होता है? नहीं होता. अब जब पार्लियामेंट्री सिस्टम इज देयर, देन you will have president, you will have prime minister, you will have governor, you will have chief minister. एक तो ये प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सपोज दिस इज स्टेट A. If the party here and the ruling party here is same, will there be a problem? No. But when PM is from different party, CM is from different party, governor, and the problems will start coming. So parliamentary system is problematic because it is based on party politics, and nature of federalism will keep on changing with the change in party. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, सॉरी, फेडरलिज्म डिस्टॉर्ट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम. ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई. पहली बात तो ये किसी किताब में नहीं मिलने वाला और अभी समझना है विथ क्लैरिटी. पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन्होंने पूछा था 2 पार्टी, तो बेसिकली इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम parties are not required. You elect a person. In presidential system, the Republicans can vote for Democrats, no problem. There is no party concept. ठीक है? But in a parliamentary system, it is based on party.
पीएम अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, पार्टी के साथ आना पड़ेगा, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन पार्टी सिस्टम। पार्टी, बिकॉज ऑफ पार्टी सिस्टम तो प्रेसिडेंट रखना पड़ता है, ठीक है। और फेडरलिज्म को पार्टी सिस्टम क्या करता है, डिस्ट्रॉय या स्पॉइल करता है, डिस्टॉर्ट करता है। तो इंडिया में एक ही साथ दो दो फेडरलिज्म्स दिखते हैं। अगर नॉन, मान लो एट प्रेजेंट बीजेपी एज द सेंटर है, तो ऐसे कोई भी स्टेट, लेट अस से दिल्ली, ठीक है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो फ्रिक्शंस होंगे, और जहां पर सीएम नालायक भी होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी पार्टी का होगा, कोई टेंशन आएगा? नहीं आएगा। तो तुम उल्टी बातें कर रहे थे, अभी समझ में आया? और इन्होंने सपोर्ट भी कर दिया। किसने किया था साथ में? ठीक है। तो अब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है फॉर नॉट एडॉप्टिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो रीजन पहले सुनो। रीजन ये है कि एक्सेप्ट यूएसए there is no other country in the world where presidential system could maintain its democratic character, ठीक है। Because in USA the tradition of democracy is so strong, presidential system did not turn into dictatorship. But in India or in any third world countries, most of the third world countries adopted presidential system, but it ended up getting changed into dictatorships. Okay, so this is also, it is not successful outside USA. Okay, so outside USA, even in Europe, which country has presidential system? Is there any country? Sweden has a presidential system. Sweden के तो PM है, PM and Queen या King. France is तो semi-presidential. France is a parliamentary system where some features of presidential system have been incorporated to treat some defects. Okay, democratic nature of presidential. Is Canada a presidential system? Canada is a parliamentary system. Our federation is based on Canada. Okay, so write this argument. Russia भी semi presidential है. Write this argument. Right, USA is the only country in the world where the democratic nature of the presidential system could be retained. Could be retained. R-E-T-A-I-N-E-D, retained, comma. In all other countries, it turned into dictatorial form of government. ठीक है, इजिप्ट है, सीरिया है, कोरिया है, कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। तो अगर इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड ही है, इंडिया में भी आया
तो वो डिक्टेटरशिप ही हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान में सेमी प्रेसिडेंशियल है, श्रीलंका हाइब्रिड ही है। ठीक है, सब जगह वही सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल जहाँ प्योर डिक्टेटरशिप है वहाँ तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही है। ओके, सो नाउ तो फाइनली what is your conclusion? So conclusion is what? Remedy cannot be worse than the disease. You cannot leave one system end up into more dangerous system. So it all depends upon the persons who are running the institutions. Is this clear? So right, to conclude, comma, institutions will not make the difference until and unless persons holding these institutions do not want to change, do not want to change. लेकिन आंसर कैसा होना चाहिए हमारा? फ्यूचरिस्टिक। केवल हमें यही नहीं बताना है कि जाएंगे, तो फिर लॉजिक्स भी बताने हैं, लेकिन कोई समाधान भी तो निकालो। लोगों ने कहा इंस्टेबिलिटी है, तो भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम ट्राई कर दो। मान लो ये नहीं ट्राई कर रहे, बट विल यू लीव द थिंग्स एज इट इज? गिव सम फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, एनीथिंग शॉर्ट देन चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट समथिंग that works for India. What is your solution? Eligibility criteria for eligibility criteria. What eligibility you will put? Academic knowledge not required. Huh? Limiting the terms, no. We can have a ethics test. ethics का तो टेस्ट कर सकते हैं, ethics का एक पेपर MPs को भी दे सकते हैं, नो? मैथ्स वैच क्या करोगे उनसे? ethics का पेपर अगर कराया तो वो एक अच्छा हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट और क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं? शायद दैट इज अ गुड सजेशन। इनका भी तो टेस्टिंग होना चाहिए भाई, और एथिक्स का टेस्ट थोड़ा सा जीके वीके है। एंटी डिफेक्शन लॉज, ओके। गोइंग फॉर टू पार्टी सिस्टम, इज इट अ गुड आइडिया? feasible? Huh? Inculcating the principles of democracy, तो बड़ा लंबा टाइम है, कोई अभी के शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है? ऐसे थोड़ी प्रैक्टिकल बातें, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल बातें करो, ऐसी बातें करो ही नहीं कि लीडर्स में सुधार हो जाएगा देश के, ठीक है? या अपनी पब्लिक बदल जाएगी, ऐसी बातें नहीं करनी। समाधान कुछ और प्रैक्टिकल समाधान दिखा दो जो संभव है, ठीक है? कुछ और सोच लो। प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेबिलिटी, ठीक है? तो eliminating, how you have to prove the majority, otherwise how come government has, and how will you say that this government has people's will? The highest mandate can form the highest mandate of the party who has the highest mandate can form the government. Party with the highest mandate, but if no confidence, confidence ही नहीं होगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही खत्म। क्या? और बीच में लोग करप्ट होते गए,
बीच में प्राइम मिनिस्टर बदमाश होता गया तो फिक्स कैसे? अरे नो, अच्छा बस एक सिंपल सा लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो दुनिया बदलने वाले सजेशन देना भी मत, ठीक है? दुनिया तो बदलेगी नहीं और इंडिया तो कभी नहीं बदलेगा। कॉन्टिन्यूटी अपना सबसे एंशियंट कंट्री, इतने ओल्डेस्ट कास्ट सिस्टम कब से चल रहा है? एंशियंट टाइम से चल रहा है। कुछ बदला है यहाँ पे? या कुछ नहीं बदलेगा। तो तुम ऐसे प्रैक्टिकल सजेशन देखो, राइट? द मेन रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन with the parliamentary system is political instability, defections and corruption. Hence we can experiment with following systems. First, introduction of the system of the constructive vote of no confidence, constructive vote of no confidence as found in Germany. You know this? In Germany, before you bring a vote of no confidence against the government, opposition has to prove its majority. ठीक है? तो इंडिया में क्या होता है? Opposition come together to throw somebody out of power, but on their own they are unable to run the government, क्योंकि कोएलिशन का ऑब्जेक्टिव ही बस इतना सा था। ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया टू थ्रो, फिर उनके पास रीजन नहीं रहता है। तो अब ऑल आर इलेक्टेड, so you have to manage somehow. It's not that because of your political ambitions country has to go for elections again and again. ठीक है? तो फिर 5 साल या तो तुम चला के दिखाओ, नहीं तो जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि तुम्हारी भी सरकार आके कुछ बदले मगी। सरकार तो बस ऐसी एक चाहिए होती है, लाइक अ शो पीस इन अ ड्राइंग रूम, नो? बाहर सब लोगों को दिखाने के लिए हम, सरकार से कुछ होता तो है, कुछ होता तो है नहीं। तो तुमने रूल किया या इन्हें, इससे डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो डोंट मेक इट सच अ बिग इशू, लेट देम गवर्न। फाइन? यस। So if has a majority, the government will, if it is a majority, then no problem. The problem comes when coalition, and when coalition partners are not stable, and why you leave somebody? It is not on the principle you leave, because in India coalitions are not based on principles. Principle पे वैसे ही नहीं based है। तो प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल से साथ आए ही नहीं थे तो प्रिंसिपल से छोड़ के कहाँ जाओगे? छोड़, ठीक है? तो आए कैसे तुम? पैसे से। जाओगे कैसे? पैसे से जाओगे, ठीक है? तो प्रिंसिपल्ड कोएलिशन होता ही नहीं अपने आप। तो अपना क्या है? कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नाउ शी वाज सजेस्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। इज इट लिंक्ड? It can be linked with reducing the expenditure,
but not with this. You were suggesting yes. Second thing is, we anti-defection laws. We can tighten the anti-defection laws by addressing the loopholes. By addressing the loopholes. हाँ, यस, इवन उसी को रिफॉर्म करना है, कोलिशन पर भी लगना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन अब आंसर में ये सब नहीं बताना है, कोई ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने पे है। बहुत सारे वो पढ़ेंगे, अभी ऐसे थोड़ी, बहुत सारे इश्यूज हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट बिल्स डिफीट नहीं हो रहे हैं तो चलने दो। अगर गवर्नमेंट का मनी बिल ही डिफीट हो गया तो गवर्नमेंट थोड़ी चल सकती है। तो यू कैन बी विद इन द गवर्नमेंट, यू कैन बी आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो भाई जितने लोग इलेक्टेड तो सभी हैं ना, यू शुड लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर। ठीक है, इतना बहुत है इस आंसर के लिए। ठीक है, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री इज क्लियर नाउ, फाइन। सो नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन, एनीबडी फाइंडिंग डिफिकल्ट लॉट ऑफ कंसेप्ट? अमेरिका में 2 पार्टी है, वो एक हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में पार्टीज की जरूरत पड़ती है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में अलग ही सिस्टम है, कहीं भी पार्टी बेस्ड गवर्नेंस है ही नहीं। तुम्हारी पार्टी मेजॉरिटी में होगी तब तुम प्रेसिडेंट होगे, ऐसा है अमेरिका में। और अमेरिका वालों को ब्रिटिशर से नाराजगी थी कि नहीं थी? तो वो लोगों ने क्या सोचा, हम ऐसा कोई भी फीचर नहीं रखेंगे जो ब्रिटिश होगा, इसीलिए इन्होंने ऑल्टरनेटिव सोचा। इनकी स्टडी की, तुम्हारा क्या है, फ्यूजन, लिखो यहाँ सेपरेशन। ऐसे ही हुआ, अच्छा तुम्हारा सिस्टम पार्टी पे बेस्ड है तो हम इस पे करेंगे, तुम्हारा यूनिटरी है तो हम फेडरल करेंगे। कौन? अरे भाई पार्टी बनाना नेचुरल है, एक जगह सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि वो सिस्टम काम ही नहीं कर सकता जब तक पार्टी नहीं होगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट कैसी है? कैबिनेट, कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब पार्टी। जब तक इतने लोग नहीं होंगे सरकार नहीं बन सकती। तो यहाँ की ज़रूरत है कि नहीं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बन गई तो बन गई, ज़रूरत थोड़ी थी बनाने की। अभी भी नहीं समझ में आया भाई? पार्टी कहाँ लगेगी बताओ? पार्टी में कहाँ, पार्टी का काम कहाँ लगता है? गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में कलेक्टिव सिस्टम है तो अकेले तुम कुछ कर पाओगे? तुम्हें और लोग चाहिए, जब और लोग आ गए तो क्या हो गया? पार्टी। और कुछ लोग जो तुम्हारे से नाराज थे उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, वो कौन बन गई? अपोजिशन पार्टी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपोजिशन पार्टी और इसके बिना नहीं चलेगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट को चाहिए ये सब? तो अमेरिका में पार्टीज चाहिए ही नहीं। अमेरिका में 2 पार्टीज की आइडियोलॉजी में देयर इज नो डिफरेंस, because party system is just a natural growth, it is not required by the system.
Okay. Is there anti-defection law in presidential system? No need, na? Because this is required only in a parliamentary system, so that MPs, MLAs do not leave the party. Okay. Similarly, is there any need of independence in Indian system? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होने चाहिए थे इंडियन सिस्टम में? नो. इंडिपेंडेंट क्या करेगा? कैन इंडिपेंडेंट फॉर्म अ गवर्नमेंट? है? और लोग वोट्स करते हैं इंडिपेंडेंट्स को बहुत कम. तो लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड एंड द इंडिपेंडेंट्स, दे हैव नो सिग्निफिकेंस इन द सिस्टम. ऊपर से एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद इफ यू have one as an independent, you cannot join any party. ठीक है. इंडिपेंडेंट का क्या रोल है? कोई रोल नहीं. फिर वो करप्शन ही बढ़ाएगा. ठीक है कि भाई तुम पैसे दे दो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या? हम कमिटेड नहीं है. ठीक है. जो पार्टी पैसे देगी हम उसको सपोर्ट कर देंगे. तो जिसके पास पैसा नहीं हो पावर में आ सकता है क्या? चलो अब खत्म. इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी है. तुम्हारी आइडियोलॉजी में तुम्हें दूसरा इंसान मिल नहीं रहा. ठीक है. तुम्हारी आइडियोलॉजी का क्या करना है? दो लोगों को तुम कन्विंस नहीं कर पाए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, फिनिश द सिस्टम. Not election commission, law commission. Law commission's report on electoral reform finish the system of independence. जीत के तो आया, तो तुम्हारी एक पार्टी बना के आओ ना. जीत के तुम करोगे क्या? Will you ever be in the government? Will you be able to form? Can you be a prime minister? Yes, anti-defection law is applicable to Rajya Sabha also. Tell me, anti-defection law applicable to Speaker? Yes. Here, let us change. Yeah. America is liberal democracy. एक second. Let me hear. Yes. No, for democracy you don't need party. For liberal also you don't need party. You can be a direct democracy also. Competitive party system matlab if parties are there, then it should be competitive. It should not be hegemonic. But we have not written there has to be parties. Now you got it? Not required. अब ये डिस्कशन खत्म हो गया. अरे तो वो तो पढ़ेंगे ना एंटी डिफेक्शन लॉ में. ठीक है. अब मेन चैप्टर ही पे नहीं आने लोगे तुम लोग, कंसेप्ट ही करते रहोगे. ये हो गया सब पार्लियामेंट्री सारे कंफ्यूजन्स. They are but passing the bill. In USA there is a separation. Both the houses. But US में executive legislature का कोई संबंध नहीं. तुम्हारी बातें क्यों सुनेंगे? Should be. तुम क्या हो? क्यों तुम्हारे कौन सी बातें? Should be. तुम्हारे हिसाब से थोड़ी सरकार सिस्टम चलेगा. What? There is anti-defection law for the members of Rajya Sabha also, including deputy chairperson, not for vice president. Is this clear? So MPs, because my party is in majority in Lok Sabha, you are earlier from my party in Rajya Sabha, some other party gave you money, then you can stop my bill or not.
तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया हैज बीन पास्ड in the interest of the ruling party. All provisions are in the interest of the ruling party. So we cannot discuss it right now. Let us finish the concepts. Parliamentary, presidential, clear? Now let us see unitary and federal. Another classification. No, we have not done semi-presidential. Okay, just do hybrid or semi-presidential form of government. Right example, France. Okay, so France is the first country. Other examples you can write Russia, Afghanistan, Sri Lanka. What is in Maldives? Which type of democracy? Which form of government? Presidential system? पाकिस्तान कौन सा सिस्टम है अभी? ठीक है, हाँ, पाकिस्तान फिलहाल तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो पार्लियामेंट्री है. अगले इलेक्शन के हिसाब से क्या हो जाए पता नहीं. ठीक है, मालदीव्स ऑटोक्रेटिक थोड़ी था, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस. When Nasheed was, it was a democracy, na? But presidential or semi-presidential? I think semi. Most of the new countries go for semi-presidential because it has virtues of both presidential and parliamentary, but it is complicated. Okay, so Maldives will see and let me know tomorrow. Okay. So most probably it should be semi only. Okay. Now what is the example you have written? France. So here you write that France is known as laboratory of political experiments. Means they have experimented with multiple forms of governments. ठीक है, right, next. One of the major problem in France
through Prime Minister there is a accountability and he is a link. अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंच सिस्टम से और उसका मेंस में भी कहीं कहीं यूज़ होगा. तो एक टर्म है फ्रांस का नोन एज कोहैबिटेशन. ठीक है, ऐसे लिखो व्हाट इज कोहैबिटेशन. Right? Right. It is a situation when president is from different party and prime minister is from different party. है ऐसा क्या? हाँ, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टी. ठीक है, तो अभी लिखो राइट. राइट, सच सिचुएशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सच सिचुएशन अराइजेस या सच सिचुएशंस अराइज. Such situation arise when the lower house has the majority of members from the party, comma, which is different from the party of president. ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रेसिडेंट के पास तो बहुत सारे पावर्स हैं लेकिन पीएम है. पीएम अकाउंटेबल है हाउस के लिए. तो प्रेसिडेंट कैन चूज एनी पर्सन, बस एक कंडीशन है, दिस पर्सन शुड एंजॉय द कॉन्फिडेंस. अगर हाउस में जो लोग हैं, एमपीज हैं, इनकी पार्टी डिफरेंट है तो प्रेसिडेंट को बाई कंपल्शन पीएम ये वाला चुनना पड़ेगा. तो ये पीएम और ये प्रेसिडेंट में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं होंगी. तो इसको क्या कहते हैं? कोहैबिटेशन. ठीक है, तो उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी डिक्लाइन करती है और पार्लियामेंट की पावर बढ़ती है. ये समझ में आया? तो फ्रेंच सिस्टम ऐसे ऑपरेट करता है. ओके, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द डिफरेंट पार्टी. तो इंडिया में जैसे मोदी फ्रॉम बीजेपी, जब प्रणब मुखर्जी थे कांग्रेस, तो वो सिचुएशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कोहैबिटेशन. तो सिस्टम उतना स्मूथ नहीं चलेगा. ठीक है, तो अगर जैसे के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, तो प्रॉब्लम्स और फ्रिक्शंस आते रहेंगे. तो फॉर्मल तो नहीं है अपने आप कोहैबिटेशन, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशंस अराइज. तो ये हो गया फ्रेंच सिस्टम. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन बाई second ballot system. Systems of elections also I will tell. President can remove Prime Minister, he can choose anybody, but whosoever. President, Prime Minister is his appointee. Prime Minister can be removed in both the two ways in France. First, by the vote of no confidence, and second by the President. Okay, but he can remain in power only
with the confidence of the house and obviously confidence of the president. तो प्राइम मिनिस्टर बनना is like a responsibility without power. इधर से मरते हो या इधर से मरते हो, वो बेकार है. फ्रांस में पीएम बनना इज यूजलेस. ठीक है. तो अब एक इतने सिस्टम पढ़ ही लिए तो एक और पढ़ लो, जर्मन सिस्टम. जर्मनी इज अ डेमोक्रेसी नाउ. बड़ा कम आवाज आ रही है. जर्मनी डेमोक्रेसी नहीं है? पक्का? ठीक है. जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल? पार्लियामेंट्री सिस्टम. और जर्मनी में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स हैं या नॉमिनल? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. ठीक है. चांसलर इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो हैज टू फॉर्म. ब्रिटिश फॉर्म को क्या कहते हैं? वेस्ट मिनिस्टीरियल. और जर्मन फॉर्म को चांसलर्स, तुम क्या कह रहे हो? चांसलर्स डेमोक्रेसी या जर्मन सिस्टम. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो जर्मनी का क्या है? फर्स्ट, राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम बट नॉट ऑफ वेस्ट मिनिस्टीरियल टाइप. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, वेस्ट मिनिस्टीरियल जो ब्रिटिश सिस्टम का होता है, वेस्ट मिनिस्टीरियल सिस्टम. नेक्स्ट, राइट, राइट, जर्मन सिस्टम इज नोन एज चांसलर्स डेमोक्रेसी. चांसलर्स डेमोक्रेसी. ठीक है. राइट. इन जर्मनी पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर is more powerful than the position of prime minister in Britain या वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल. ठीक है. राइट. इन जर्मन सिस्टम the concept of collective responsibility in the form of a strong cabinet principle does not exist. स्ट्रॉन्ग कैबिनेट सिस्टम टाइप नहीं रहता. ठीक है. डज नॉट एग्जिस्ट. अब लिखो राइट, राइट, ऑल पॉलिसी डिसीशंस आर टेकन बाय चांसलर, comma, there is no need for the approval by cabinet. Next, individual ministers
enjoy lot of autonomy. अपने यहाँ क्या है, सारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, वहाँ पे चांसलर पॉलिसी गाइडलाइंस देता है, उस गाइडलाइंस में इंडिविजुअल मिनिस्टर फ्री है, डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय कैबिनेट. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, राइट, कैबिनेट प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली when there is a conflict between two departments or ministries. ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्ट और एनवायरनमेंट में तब सब लोग मिलके करते हैं, वरना कैबिनेट सिस्टम वर्क नहीं करता वहाँ पे. और जर्मनी का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अनदर फीचर क्या है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अब एक और एग्जाम्पल लिख लो, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड. तो स्विट्ज़रलैंड तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. क्या हुआ? How direct democracy is practiced at the national level? What are the institutions? Referendum, right? Yeah, right. There are 3 institutions. First is referendum. Referendum. ठीक है, रेफरेंडम. रेफरेंडम मतलब क्या होता है, राइट, राइट. एनी बिल पास्ड बाय द असेंबली और द लेजिस्लेचर is put to vote by the citizens. ठीक है, तो जब हमने सिटीजन्स को रिफर किया तो वो क्या बन गया, रेफरेंडम. तो कोई भी बिल लॉ बनने के लिए पहले सिटीजन्स को रिफ़र करते हैं, मतलब असेंबली पास कर देती है, फिर सिटीजन्स का यस और नो लेना पड़ता है. सेकंड होता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इनिशिएटिव में बिल का इनिशिएटिव इज टेकन बाय द सिटीजन्स. सिटीजन्स ही इनिशिएट कर सकते हैं बिल. जैसे इंडिया में ट्राई किया था जन लोकपाल बिल. ठीक है, तो जब बिल सिटीजन्स ने बनाया, सिटीजन्स हैव इनिशिएटेड, वंस पास बाय द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, देन असेंबली हैज नो वर्क, दे हैव टू से यस. इज दिस क्लियर? सो राइट, initiative, right, when citizens themselves initiate the legislative process. Next is recall. Recall, right, citizens can call the elected representatives
before the completion of the term if dissatisfied. Should we introduce recall in India? Yes तो बोल दिया, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बोला, लॉजिक भी तो बताओ हैं? अगर वो सुनेंगे नहीं तो रिकॉल कर सकते हैं. तो वाई वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड इट? इम्प्रैक्टिकल. तो व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल, is there any point discussing the introduction? Recall is not practical in India. Why it is not practical in India? हाँ? हाँ, एक तो इलेक्शन इतना महंगा है, वही इलेक्शन ही कराते रहेंगे और लोग इसलिए नहीं रिकॉल करेंगे कि भाई तुम काम अच्छा कर रहे हो, यहाँ अच्छे वाले को भी कर देंगे, ठीक है. तो फिर क्या होगा, फिर अपोजिशन वाले दे विल कम टुगेदर एंड रिकॉल. तो रिकॉल कैन बी जस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, ठीक है. तो इट विल अगेन क्रिएट न्यू सेट ऑफ इंस्टेबिलिटी. सो यू हैव टू गो फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग रिकॉल? हाउ मेनी टाइम्स? After how much time is over? And suppose some people did not participate in the election at the time of election, will you out them or will you not allow them to participate in the recall, those who have not participated? Because when they have not elected the person, what right they have to call him back? So there are so many procedural problems that it is not advisable, and think something else to ensure the accountability of parliamentarians. You have understood this? And is there is a difference between referendum and plebiscite? So plebiscite is taking opinion. It is not necessarily linked to democracy. So you have understood liberal countries and democracies. So next, let us see the next ideology. Yeah. By referendum, but it was a advisory referendum. It was not a binding referendum. So it was up to Parliament to accept it or not. But it was the election promise of the government of conservators or Cameroon that they thought that they will introduce. It was not binding. Not at the national level, but in some contexts, like in amendments. In Australia, amendment needs ratification by the people. Okay? But at level of local government, yes. Okay? So now, features of democratic systems you have understood. Now write socialist. Write socialist. Socialist countries or socialist systems. ठीक है. अब socialism's history तो you must be knowing. You don't know Karl Marx. ठीक है Marx. सोशलिज्म, जैसे जो कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म केम अगेंस्ट
कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या था? मार्केट बेस्ड सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म की वैल्यू क्या है? इंडिविजुअलिज्म। Individual profit. There is nothing wrong if I make profit. Is this clear? But because of extreme capitalism, what was happening in West? There was a big there was a inequality. So few rich and large number of poor. So there was a call for revolution. There was a call for change, revolution. Okay. So against this came socialism. Socialists said it is not necessary to base our production या modern industries on capitalistic system. Capitalism means private ownership. It can be organized in other form. What is other form? Social ownership. ये कुछ समझ में आ रहा है? एक पर्सन, सोशलिज्म में क्या होता है? इंडस्ट्री जो है वो एक इंसान के हाथ में रहती है। कलेक्टिव। कोऑपरेटिव्स किसका कॉन्सेप्ट है? सोशलिस्ट का। तो सारे लोग मिलकर ओनर बनेंगे। तो जब सारे लोग ओनर हैं तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी एक जगह, इसलिए वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इनइक्वालिटी विल नॉट बी देयर। दिस इज देयर आइडिया। तो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म मीन्स सोसाइटीज ओनरशिप। ओके, कोऑपरेटिव। ये समझ में आया? सोशलिज्म का लिंक था इनइक्वालिटी से। ओके, अब अगर वैल्यूज में देखेंगे, सोशलिज्म आया या उसकी वैल्यू क्या है? सोशलिज्म मतलब सोसाइटी। सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल। तो दे गिव इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। तो इंडिविजुअलिस्ट वाले लोग गिव इंपॉर्टेंस टू लिबर्टी। सोशलिस्ट वाले लोग सोशल एंड इकोनॉमिक, इनका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना। ठीक है, सोशलिज्म समझ गए? समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। तो समाजवाद लाने का क्या मतलब है? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। डू यू थिंक इनकी पार्टी यही करती है? तो इंडिया से अगर सोशलिज्म वोशलिज्म समझे तो तुम सोचोगे सोशलिज्म मतलब परिवारवाद या इनइक्वालिटी। इंडिया से मत समझना, उन सिर्फ नाम है समाजवाद। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सोशलिज्म का मतलब होगा सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, नो लिबर्टी, लिबर्टी नहीं चाहिए। और इनके लिए लिबर्टी क्या है? दो तरीके की लिबर्टी है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया। एक जो कैपिटलिस्ट वाले हैं वो सब एम्प्टी लिबर्टी वाली बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। और ये लोग क्या कहते हैं? भूखे पेट भजन नहीं होता। ठीक है, तो फ्रीडम नहीं चाहिए, रोटी। इज दैट क्लियर? फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक
नीड्स का सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए ही नहीं। तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ में एक ही वैल्यू सिस्टम होता है, इक्वालिटी। जब एक ही वैल्यू सिस्टम होता है तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ में एक ही पार्टी होती है। जब एम ही एक है, एम क्या है? इक्वालिटी। इज दिस क्लियर? तो सोशलिस्ट कंट्रीज आर वन पार्टी स्टेट्स, one party constitutions. So I think you will not be able to remember, understand now. I will discuss tomorrow. For today you write down the concepts. Yes? क्या? How communism? तो ये समझ लो, वैसे तो कल समझा देंगे। सोशलिज्म जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। द सोशलिज्म विच वॉज गिवन बाय मार्क्स इज कॉल्ड कम्युनिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है? एवरी मार्क्सिस्ट इज अ, या एवरी कम्युनिस्ट इज अ सोशलिस्ट, बट एवरी सोशलिस्ट इज नॉट कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट वाले लोग कौन हैं? जो मार वारने में बिलीव करते हैं, लाल सलाम, रेड फ्लैग वाले, खून वाले, ठीक है, वायलेंस। इज दिस क्लियर? और बाकी सोशलिस्ट तो नेहरू भी थे, तो नेहरू वाला सोशलिज्म कैसा है? फेबियन सोशलिज्म, पीसफुल सोशलिज्म। तो वो वी विल डू टुमारो। आज के लिए कॉन्सेप्ट्स लिखो, पीछे से ही चलते तब क्या क्या याद हुआ। तो जो जो पता है वो कहना, नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। इनिशिएटिव, नो नीड। रिकॉल, प्लेबिसाइट, चांसलर्स डेमोक्रेसी, ओके राइट। कोहैबिटेशन, यू राइट, कोहैबिटेशन। Try to remember, or see you remember cohabitation. Next, constructive vote of no confidence. Constructive vote of no confidence. Next, constructive vote of no confidence. Next, concept of gridlock. Next, बाकी तो डिफेक्शन, कोएलिशन, ये सब समझ में। नेक्स्ट लिखो, वाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज नॉट डिजायरेबल। नेक्स्ट, difference in effective majority and absolute majority. Difference in effective majority and absolute majority. Next, meaning of procedure established by law. Next, meaning of due process of law. Next, difference in Article 9, difference in the freedom given in Article 19 and Article 21. ठीक है, एनीथिंग एल्स जो नहीं समझ में आया? बाकी तो सब बहुत सिंपल था, ठीक है। Tomorrow we'll continue. I'll explain what is socialist system, and the first topic most probably we will start syllabus से historical जो acts वैक्ट्स हैं।
Yeah.